अरे हर्षित भाई, आई वांट अ गुड गेमिंग फोन यार, कुछ सजेस्ट करना। ओके बट अरे आई नो यू आस्क फॉर द बजट ना, एग्जैक्टली क्या सो बजट? इट्स 20K। ओके सो तुम्हारे साथ साथ आप सब लोग भी जान लीजिए एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाइक दिस डू सब्सक्राइब गैजेट 360। So at first, if you want a good gaming phone but the looks of the phone also matters to you, तो आप ले सकते हो Poco F5. This smartphone cost around 19K. Poco F5 comes with a 6.67-inch display with Gorilla Glass 5 protection and 120Hz of refresh rate. So while gaming, this phone screen will not disappoint you. Now talking about performance, Poco F5 comes with Snapdragon 7 Plus Gen 2 processor, which is a 4nm based fast processor. गेमिंग, मल्टीटास्किंग सभी आप इसमें बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से कर सकते हो। द फोन कम्स विद 12GB RAM and 256GB UFS 3.1 storage type. Now for the long gaming sessions you get a 5000 mAh big battery which can last longer plus also support 67 watt fast charging, तो जल्दी से चार्ज भी हो पाएगा। Poco F5 comes with Bluetooth 5.3 and dual band Wi-Fi, so while playing game आपके सभी वायरलेस डिवाइस easily कनेक्ट हो जाएंगे। Next is Redmi Note 14, which cost around 19K as well. Redmi Note 14 comes with a 6.67-inch display with 120Hz of refresh rate and 2100 nits peak brightness, so that you can enjoy gaming sessions in outdoor conditions as well. The phone comes with IP64 rating, तो water and dust resistance भी आपको मिल जाती है। Talking of performance, this phone comes with Dimensity 7025 Ultra processor, which is a good processor, and with this you also get 8GB RAM and 128GB internal storage. With this phone you get a bigger battery as well. It comes with 5110 mAh of battery, जो आपका साथ जो है लंबे hours तक निभा सकती है, तो आप लंबे गेमिंग सेशंस आराम से कर सकते हैं। And for wireless connections you also get latest Bluetooth and dual band Wi-Fi. Next is iQOO Z9s, which is a powerful phone also. This phone costs around 20K and this phone is a good option for you because you get a bigger 6.77-inch AMOLED display with 1800 nits peak brightness and 120Hz of refresh rate. So ये फोन डे लाइट में भी यूज करा जा सकता है एंड आपको स्क्रीन में किसी तरह का लैग भी नहीं आएगा। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज प्रोसेसर। सो विद iQOO Z9s you get a Dimensity 7300 processor which launched almost a year back and performance के लिहाज से एक अच्छा फोन प्रोसेसर भी है ये। You can play games and do multitasking as well, and for all of this you need a good battery as well. इसीलिए with this device you get a 5500 mAh battery which supports 44 watt fast charging. Now we have Motorola G85, which costs around 17K. Motorola G85 comes with 6.67-inch display with 120Hz of refresh rate and 1600 nits peak brightness. तो ये जो डिस्प्ले है इस पे आप बिंज वॉचिंग तो आराम से कर सकते हैं और गेमिंग भी बिना किसी प्रॉब्लम के कर पाएंगे। और गेमिंग को अच्छा बनाने के लिए you get Snapdragon 6s Gen 3 processor, which is a good processor. You can play games and do multitasking without any problem. And for all of this you get a 5000 mAh big battery, so you can do your gaming sessions for a long time. And you also get Bluetooth 5.1 and dual band Wi-Fi for better wireless device connectivity. Last but not the least, we have CMF Phone 1. Now, if your budget is even lower than 15K, तब आप इस फोन को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। This phone comes with 6.67-inch display with 120Hz refresh rate and 2000 nits peak brightness, तो डे लाइट में भी बिना किसी प्रॉब्लम के आप यूज कर पाएंगे। You get Dimensity 7300 processor with this device, which is a powerful processor in this budget, and you can even play games and do multitasking as well बिना किसी प्रॉब्लम के। This phone offers you 6GB RAM and 128GB इंटरनल स्टोरेज एंड साथ ही में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है और 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है। खैर इनबॉक्स आपको चार्जर नहीं मिलेगा लेकिन अलग से लेना पड़ेगा। So these are the best gaming phones under 20K which you can buy. Well, which one of them do you like the most? Do let me know in the comment section. And अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप मुझसे comment section में पूछ सकते हो। I am your host Harshit Arora signing off. I'll see you in the next one.